Good morning, students. Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. So, students, today's thought of the day is no one is perfect. That's why pencils have eraser. यानी जो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हर तरीके से एकदम परफेक्ट होता है, जिससे कोई गलती ना हो, ऐसा तो कोई नहीं होता है। तो भले हम कितना भी समझते हो, जानते हो, फिर भी कभी ना कभी हमसे छोटी या छोटी सी गलती भी होती रहती है। और इसीलिए ऐसे भी कहा जाता है कि पेंसिल हैव इरेजर, यानी जब कुछ गलत हो जाता है, गलत लिखा जाता है, जैसे आप तो स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग क्या करते हो, मोस्टली आप लोग तो सब लिखते हो, you just copy and write, or you just if the thing which you are knowing, you are writing that in your book. Sometimes what happens, sometimes the small spelling also get mistake. So at that time what we do, if you are writing with pencil, you just rub out and remove with the help of eraser. Eraser यानी क्या, रबर। रबर से हमने जो भी लिखा होता है वो हम पेंसिल से लिखे हुए चीजों को रब कर देते हैं। वैसे ही इसलिए ऐसे कहा जाता है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं है पूरी दुनिया में कि उससे कोई गलती नहीं होती है। अगर पेंसिल से लिखते फिर भी गलत होती है और हम रबर से कुछ रब कर देते हैं, इरेजर से रब कर देते हैं, तो हम अगर लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत मुश्किल हो जाती है और हमसे गलत होती रहती है, तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। उसको इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसमें से गलतियों को निकालना है और उसको, अगर जैसे आप स्टूडेंट हो तो पढ़ना शुरू करना है, लिखना शुरू करना है और कामयाब बनना है। ओके, एंड फॉर दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड दिस वन, दैट नो वन इज परफेक्ट। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हर तरीके से परफेक्ट होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भले आप पेंसिल से लिखते हो ना, तो भी इरेजर से उसे रब कर सकते हो, यानी गलतियां करते हो तो उसको भूल के, उसे छोड़ के वापस से उसे बनाने की, अच्छा बनने की प्रयास करना चाहिए। ओके, सो okay students, after question number 3 we are going to start question number 4, and that is true or false. ट्रू और फॉल्स, अगर वो जो ट्रू है या फॉल्स है वो हमें देखना है। ओके, सो सी ईच कलर वाज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कलर। सब अपने आप में जब वो लोग लड़ रहे थे, when they were having the quarreling fight ना, at that time each color was telling what they were telling, that they are most important one, and for that time it was such। क्यों ऐसे सच है, ट्रू है, क्योंकि उस टाइम सभी बोल रहे हैं ना, and because of that each color was saying that it was the most important color, so the answer is true. Okay, then second, Violet says that it stands for modesty. So according to the Violet, what he was saying, that he is standing for modesty, means humility and modesty. He is saying that he is standing for that, and so the answer is true. Then next, indigo is the color that has nothing to do with meditation. अब यहाँ पे क्या है कि वो कह रहे कि इंडिगो की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी मेडिटेशन की वजह से है, तो ये आंसर क्या है, फॉल्स। ही इज नथिंग टू डू विथ meditation, he is doing. So here the answer is false, that indigo is the color that has nothing to do with meditation. So here the answer is false. Then next, green is the color of nature. Green is the color of nature na, we can see all the trees and plants and grass, all is green only na, so it is very near to the nature na, so the green is the color of nature, so here the answer is true. Then red shows wisdom. Sure, here they are asking this, red shows wisdom, so the answer is no, it won't shows wisdom, so the answer is false. Okay, then authority is shown by violet. Thus the violet color shows the authority. क्या उसने सब जगहों पे authority दिखाई थी उसकी? No, so the answer is false. Here the authority is shown by violet
अपनी कहीं पे भी अथॉरिटी नहीं दिखाई, तो आंसर इज फॉल्स। Then the rain was in great quiet mood. The rain was in quiet mood? No, he was very angry na, because all these colors were fighting. So the answer here is the rain was in great quiet mood. So the answer is false. Then according to rain, the colors of the rainbow were foolish. उसने क्या, रेन को क्यों ऐसे लगा, क्योंकि वो बहुत सब लड़ाई कर रहे थे तो उनको वो सभी के सभी मूर्ख लगे, इसलिए that according to rain the color of the rainbow were foolish, and the answer is true. Okay, when who felt that rain fall, that the color of rainbows were foolish. Then the rain was advised the colors to hold hands and help each other. What the rainbow advised to the colors, that you must have to catch your hand and have to help each other. एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. So the sentence is true here. The rain advised the colors to hold hands and help each other. So the answer is true. Then if the colors join hands, they can form a very nice rainbow across the sky. Means जब ये सारे कलर्स एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और एक बहुत अच्छी सी मीन्स वहाँ पे नाइस रेनबो बनाएंगे तो क्या होगा, स्काई के नजदीक तो वो बहुत सुंदर दिखेगा. और इसलिए इफ द रेनबो कलर्स join their hands they can form a very nice rainbow. एक बहुत सुंदर सा रेनबो बनेगा. और वो कहाँ पे होगा रेनबो, स्काई के पास. So the answer is true. If the color join hands they can form a very nice rainbow across the sky. The rain advised that the color should forget their differences and shine together. क्या कहा रेनबो ने, अरे रेन ने सभी रेनबो कलर्स को कि आप लोगों ने भली लड़ाई की है तो वो सारी चीज़ों को अभी आप भूल जाओ, एक दूसरे की भूलों को, एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस है जो उन सबको भूल जाना और एक साथ सबको शाइन करना है. सो द सेंटेंस व्हाट द रेन एडवाइस वाज द करेक्ट सेंटेंस. सो द आंसर इज ट्रू. द रेन एडवाइस दैट द कलर should forget their differences and shine together. The answer is true. So again we are going to repeat it. Okay, so each color was saying that it was the most important color. Answer true. Then violet says that it was stands for modesty. Violet says that it stands for modesty. True, because it stands for humility and modesty. So the answer is true. Indigo is the color that has nothing to do with the meditation. Here the answer is false because we do much things for the meditation. So this is the wrong one and here we will write false. Okay. So next one. Green is the color of nature. We can see all the colors for plants, trees and leaves and grass and all that in green color only. So it is called as the green is the color of nature and the answer is true. Then red shows wisdom. Here the red is not showing the wisdom now. So the answer is false. Authority is shown by violet. Here they are saying that authority is shown by the violet. So the answer is wrong. So here the answer is false. The rain was in great quiet mood. The rain was not in a quiet mood. So here the answer is false because he was very angry at that time now. So here the rain was in great quiet mood. The answer is false. According to rain, the colors of the rainbow were foolish. Because they were fighting now, so rain thought that all the rainbow colors are foolish. So here the answer is true. The rain advised the colors to hold hand and help each other. The rain advised them not to get together by holding the hands and helping each other. So the answer is true. Then if the colors join hands,
they can form a very nice rainbow across the sky. Means according to the rain. So what he said to the colors, that when you will join your hand and form, when you will join your hand, so what will happen, you can form a very nice rainbow across the sky. So the answer is true. Then the rainbow advises that the color should forget their differences and shine together. Here also the answer is true, because according to the rain, what is that he advises to the color that you have to forget your differences. जो भी आप लोगों की जो भी अलग अलग सब लोगों की डिफरेंसेस से थी उसे भूल जाना है और एक साथ सबको शाइन करना है. सो द आंसर इज ट्रू. ओके.